You are live. We are live. सरबा भैया कहाँ रह गए इधर? आ गए प्रेजेंट मैम. सर्वा भैया आ गए. वो मेरे को मीम याद आ गया कि इतना पैनिक हो गया प्रेजेंट मैम बोलने के लिए प्रेग्नेंट मैम बोल दिया मैंने. ओह शिट. हुआ है एक्चुअली. इम्प्रेस करने के चक्कर में मैडम को या सर को. किसने? अरे हम लोगों से हुआ है सब. पैंट शर्ट मैम, प्रेग्नेंट मैम, सब मैम हुआ है. हेलो एवरीवन, हाउ इज. अभी यहाँ पर कोई पीछे बोल रहा था वर्क ऑन योर ग्रामर. मेरे को ना कोई भी बोलता है, मैं इसलिए सावियो भैया को भी बोलता हूँ कभी कभी कि मेरे को कोई भी बोलते ग्रामर में कुछ है, आई कैन शो ऑफ बाय सेइंग के स्टैंडर्ड 12th के बोर्ड एग्जाम में मेरे को 98 मिला था इंग्लिश में. Oh, that's nice. Highest in the entire class, I think. That's nice. I mean, yeah, hair English. I mean, I appreciate your English actually. It's not like that. But then afterwards, कभी जानबूझ के only I keep it very raw and desi type of, rather taking it to an accent and making it something जैसे कि we know few people जो कि करते हैं. हाँ. भाई तू 10th में, मैं 12th की बात कर रहा हूँ. 10th में सब कोई कर लेते हैं, 12th में पता चलता है. अरे नहीं कोई टॉपर नहीं यार, हम लोग तो बस हैं ही, ऐसे ही है. हाउ इज एवरीवन डूइंग? हाय फ्रॉम मस्कट. हाय इनारा. आई थिंक आप टेरो भी करते हो क्योंकि आपके आई थिंक यू आल्सो डू टेरो बिकॉज in your username there is टेरो mentioned. From Muscat, that's nice. Missed you, Savio भैया, in the last live. मैं last live में तो था, हाँ podcast में नहीं था. हाँ, unfortunately कल के podcast में भी भैया नहीं है actually. नहीं है. We all missed him and we kind of replaced him for the last two podcasts with Uncle Mike. They don't look similar in any way, but still एक है कि कोई तो है third person जिनके साथ हम बात कर सकते हैं. But even tomorrow's podcast is quite interesting. काफी देसी वाला केस हमने चुना है. There are more desi cases coming in. Of course, for sure, Savio Bhaiya will be in the next one. We are manifesting it के कुछ ना कुछ करके. पता चला हम एम्बुलेंस बुक करके भैया को उठा के लेके आ रहे हैं. Only for podcast. बॉडी लिफ्ट किडनैप करके बुलाना पड़ेगा. चलो. Yeah. How is everyone doing? I hope आप सब कोई ठीक ठाक हो, मजे में हो सब कोई. I hope कि आप लोगों ने love from England, Kanchan, Shiv Kumar. Hi. London is in the bucket list to go and investigate. You know, Savio Bhaiya, something interesting I noticed in one of the comment section. आज ही सुबह उठते ही, I think it made my day by what I read in the comment section. So in my last reaction video that came last Sunday, where I was reacting to few of the paranormal videos, उसमें मैंने बोला था कि if you guys want us to investigate the Conjuring house, do let us know because we are manifesting it and we might manifest it someday or the other. It can be this year, next year, but होना तो है ही for sure. And someone had commented, that ये लोग ने समझ चुके हैं already. They're commenting. They are getting to what I'm trying to say. So someone commented, use me as a go button to let them know that they should go to the Conjuring house. So I think there are more than 300 likes to that comment. And in that comment, someone replied to that particular comment and said, why don't you guys start a crowdfunding? We would love to donate so that आप जाके investigate करके आओ, क्योंकि हम तो आपके साथ नहीं आ सकते हैं, but we want you people to go and investigate the Conjuring house. There was one more person जो कि comment किया था उसके नीचे saying कि yes, even I will donate if they start a crowdfunding. पढ़ के मेरे को इतना अच्छा लगा ना. I like at least someone considered. I mean, ठीक है करेंगे तो बहुत अच्छा है, but at least someone considered writing that. Yeah. मतलब करेंगे नहीं करेंगे वो बात तो अलग है, दूसरी ही बात है. But people thought कि ऐसा करके हो सकता है because we have been thinking about this crowdfunding जो कि Destination Fear के बंदे लोगों ने किया, Project Fear करके, where they raised more than I think $300,000 for their road trip and to investigate the paranormal and to bring in the content on YouTube.
I don't know if we can ever do a crowdfunding or if we should do a crowdfunding, but I want to know very honestly. You guys can comment. अगर हम crowdfunding करते हैं for the three of us to go and investigate the Conjuring house that is in Rhode Island, the United States of America, would you guys donate? Is the question. Would you guys donate? Just a yes for now, sure. You do not have to commit anything. You do not have to. Alan, सबसे पहले I'll expect your Potato Man. Yes. Paras, yes for sure. Sangeeta, yes. Ishwari. Oh, Oh, there's so many yes. Gungun. So many of this. Srishti. Yeah, people are so nice. So this is nice. so overwhelming. This is so overwhelming. Yeah, My there's goodness. so many yes right now. Lovely. Means it's literally Lovely. like आंखों में आंसू लाओगे क्या Yeah. वाला I moment. swear, so many yeses. This is Yeah. overwhelming. Really, touched, completely touched. Yeah. There's so many of those Thank actually. you. I'll donate my Oh entire my pocket God. money. Sagarika, thank Nah, you we so don't much. need, we don't need your entire pocket money. I think so. You require it more than सागरिका us. शायद सागरिका ही तब से बोले जा रही है आई एम द बिगेस्ट फैन इन द Sagarika एंटायर and Soumya, यूनिवर्स. both of them actually. Soumya, सौम्या बोल रही थी क्या वो? Adimax is back. अच्छा Adimax, let सौम्या me बोल remember रही your name. Your name is Anurag, right? इस बार शायद याद है मेरे को. Anurag नाम है ना? I'll give my allowance. I'll donate from my pocket money too. Thank you so much, guys. अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, कुछ प्लान नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स as of our ways of manifesting things, we have listed down few locations जो कि हम जाना चाहते हैं, हम जाएंगे for sure, and I think and this we can put to manifestation, the three of us, that we will be the first Indian team to investigate the Conjuring house, definitely for sure. I believe in us and I believe in you people, that आप लोग help करोगे, कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी. That's how the universe works if something is supposed to happen. Big believer of how the universe works, very honestly. And manifestation. And so yeah, thank you so much everyone. Yeah, that was lovely. And we crossed a century again in terms of viewership. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much. 114. That's nice. Yes, biggest fan of Sarba. Thank you so much, Lopa Mudra. Aditya is Adima. Arey, Aditya. Sorry, Anurag Aditya. Matlab, I can understand your pain when someone calls मेरा नाम भी गलत तो understood. अभी नहीं भूलूंगा Aditya. कल मुझे किसी ने तो डीएम पे लिख दिया कि आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ सरबजीत. आई सेड देन तुम बड़े फैन हो ही नहीं सकते. Good one. That should be that's an apt reply actually. Anyone who says I'm the biggest fan and spells my name wrong, have to reconsider your status right now. People who are asking for shout out, you'll have to do something. कुछ करो. ऐसे नहीं. आज इस बार तो मैं सीख के आया हूँ. मैं तो नाम भी नहीं लूंगा. अच्छा एक काम करेंगे. सुनो Crazy mommy. Yeah, the crazy mommy is your fan, Pooja. I mean, कब से? हाँ. Pooja is no less of a crazy mommy. She's a crazy mommy to so many cats. Yeah. I'm a bigger cat mom. Yep. अच्छा अनाउंस करेंगे भाई साहब, अनाउंस करेंगे. अभी से अनाउंस कर देंगे तो फिर आप लोग निकल जाओगे ना. इट विल बी एट द एंड ऑफ द वीडियो. अभी तो फिलहाल बातचीत करेंगे. कल पॉडकास्ट आ रहा है, परसों रिएक्शन वीडियोस आ रहा है जैसे आप लोगों ने मांगा था. सरबजीत, आई एम योर बिगेस्ट फ्रेंड. सुबलक्ष्मी कर, थैंक यू सो मच. वो पूरा एकदम पूरा कोट में डाला है उसने. परसों रिएक्शन वीडियो भी आ रहा है, बट उससे बेटर चीज ये हो रही है कि नेक्स्ट मंथ हमारा टूर भी आ रहा है. दैट इज द घोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स महाबलेश्वर. एंड to be very honest, guys, we are the only people in the entire country who are doing paranormal tours. Our tour, our Joshi Vlogs, Pooja ma'am, Goa Mall के LA और L वाला series really made me emotional. Today I watched all the series. Shout out please, Joshi Vlogs. Shout out to Thank you, Joshi Vlogs. That was a very emotional moment for us as well. Yeah, it was very emotional for us as well. Yeah. And of course, any of you guys are willing to donate, please feel free to do that. There's no compulsion. It's not compulsory. It's not like it's जोरदार करना है, but अगर करना चाहते हो, not a problem. Feel free to do it, है ना?
But yeah, we were talking about our tours जो कि next month हो रहे हैं from 26th to 28th of May 2023. All three of us will be there, जो कि हम उधर रहेंगे, आपको पैरानॉर्मल के बारे में सिखाएंगे, साइकिक के बारे में सिखाएंगे, आपको हॉन्टेड लोकेशंस में भी लेके जाएंगे. This is an opportunity, guys, जो कि no one should be missing, very honestly. अगर आपको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करना है तो, क्योंकि अगर आप घर पे बैठ के अगर बोलोगे सर हमको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करना है, वो तो भाई साहब नहीं होगा ना. अभी if you want to experience the paranormal, you'll have to join us in one of the tours. Ayush, it's fine if they're using uppercase. They want to make their comment seen, and that's fine. Completely fine. Can you explain every tattoo on you? There are 12 tattoos right now, I think 11, and इनके हाथों में और separately है. हम करने जाएंगे तो लाइव खत्म हो जाएगा भाई साहब. तो वो बात की बात है ना. But Savio bhaiya, you want to add something to the tour? I hope you can hear me, right? Yeah. अच्छा, because मेरा ना वो ईयरबड्स में से एक का बैटरी कम हुआ, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉर चार्जिंग. Yeah, वो no, एक है. you are pretty much See, clear. what I wanted to say is that so many people said that, gave that yes for us to go and investigate the Conjuring house, or for that matter, anywhere internationally. That was so overwhelming. But I think more better would not be us going somewhere else on our own and investigating, but having all these people along with us and going and investigating together somewhere, be it locally. So, as you said about the ghost encounters tours, we would love to see these people actually join us to these tours. Yeah. And so many enthusiastic people. I'm just loving to see the responses that are coming right now. The 114 people watching, and the comments are just not stopping. And I think this is the fourth live that we are going, and it's the same every Friday. Yeah. I would love these people to come actually and experience and ask whatever questions they have to ask us over there. Practically, they will get all the answers, because we know we don't sleep People the who day, are we don't sleep the asking, night. yeah, sorry bhaiya to cut you off, but people Yeah. are asking के हम भी आ सकते हैं क्या? Guys, ये tour आप लोगों के लिए ही है. It's for people who want to experience the paranormal, people who want to learn about the paranormal. The age barrier वैसा कुछ भी नहीं है. दो हम प्रीफर करते हैं कि आप 16 प्लस हो, लेकिन आप 16 से नीचे भी हो और आपके पास पेरेंटल गाइडेंस या फिर कंसेंट है, तो भी हम आपको अलाउ करते हैं. You won't believe the young participant we have had for our tours was only 13 years old. वो सिर्फ 13 साल की बच्ची थी जो कि आई थी, and she is one of the best psychics that we have met as well. 15 साल के अंकित जॉनसन भाई साहब, आप अगर अपने माँ बाप को पटा लोगे, you can feel free to join us. Feel free as in you can join us. Even a parent can join, because ये जो 13-year-old आई थी, she came with her mom and they both had. I think you should watch our after movie of Goa. जो गोवा में, yes. था, उसका आफ्टर मूवी देखो. You will be able to understand हम क्या बोल रहे हैं. Yeah. And you won't believe that there are people who are coming from Dubai, Uttar Pradesh, and Delhi, and all different जगह से आते हैं just to attend this particular tour. You won't believe. Chennai, Haryana. Chennai, Haryana. Yeah, Chennai, Haryana, Odisha, for that matter. Odisha से भी लोग आए हैं to attend a tour in Mumbai. Tushar. Thank you, Tushar. Thank you so much. Thank you, Tushar, so much. Savio is a modern saint. Please don't make him a saint. Please don't make him a saint. I guess we all are saints. We all are saints. We're all helping each other out. We're all learning from each other. I think so. We all are good enough. आप टूर में ज्वाइन करो, then you will see his and you'll get to hear his other names also, जो हम लोग उनको सिर्फ टूर में बुलाते हैं. You'll have to come for the tour for that. Kanchan Shiv Kumar is asking, एक second ना Savio. Kanchan Shiv Kumar is asking, Pooja ma'am, how to cope with the loss of a mother. Kanchan, do you mind sending me a DM? I think I'll help you over it. सरबजीत भैया, आपका न्यू सब्रजीत, अभी मैं कमेंट भी नहीं पढ़ रहा हूँ. मैं तो नाम ही गलत लिखा है. मुझे पता है तूने कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन मैं पढ़ूंगा ही नहीं अभी. I'm coming, Savio. You, I'm coming. भाई साहब, ये बहुत ही गलत साउंड कर रहा है. चतुर्वेदी sounds very very wrong. यार, तो उस दिन भी तू रोस्ट हो गया था लाइव में. क्यों ऐसे कांड करता रहता है तू? I saw that live में सब कोई they were all roasting him together. मेरा और एक रूप देखना है तो मेरे साथ कार में बैठो.
कार में बैठो, टूर में आओ। मैं गोप्रो लगाने वाली हूँ सैवियो, वो तो सैवियो को भी पता नहीं चलेगा कब रिकॉर्ड हो गया। अभी उसने नहीं, अब चेंज किया। सरबजीत भैया, आपका न्यू पॉडकास्ट विद रणबीर भैया एकदम नेक्स्ट लेवल था। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आपके पॉडकास्ट का। लव्ड इट एंड सॉरी, इट्स ओके। जब अब क्या ही, अब ना करेक्ट तो कर लिया। Why you're ignoring me? No one is ignoring you, कोई नहीं जागृति, ignore लेकिन कर रहा इतने है। सारे Jagriti, comment nobody is ignoring me. I mean, there are too many comments that are flowing by, and it's very bit difficult to actually see. yeah. Yes, मेरे जटाएं आज बंधे हुए हैं, पल्लवी. I mean, thanks for noticing that. But I'm feeling very hot. You guys are funny as well. You should see and you should meet us at Get, तब पता चलेगा हम लोग क्या हैं, कैसे हैं। Kushagra is writing, dude, why are you guys harsh with me? Kushagra, if this is harsh for you, then you should come for Get again. नहीं, कोई harsh नहीं है, कोई harsh नहीं है. We are just having fun. And if you are genuinely considering to come, then yes, we will be more than happy to have you there. And someone wrote Sarbajeet भाऊ. Dude, इतना गलत कैसे हो सकता है यार तू? सप्तऋषि ने लिखा है सरदाजीत भाव. सरदाजीत. इसका स्क्रीनशॉट उठाना चाहिए मैंने. अक्षरा सोनिक सर, मुझे भी बुलाओ ना. किधर? Kushagra will see you at Kushagra will see you at the Get, and हम लोग मजाक उसके साथ करते हैं जिसके साथ क्लोज होते हैं ना. So I mean we're not actually trolling you or being harsh on you or anything like that. You asked Neeraj Singh was there on the live. I don't know if he's still there. Neeraj Singh. उनको पूछो कि 100 बोल के भाग गया वो. हाँ, नीरज को पूछो हम कितना क्लोज हो सकते हैं लोगों के. You'll get to know. नीरज अभी भी फॉलो के लिए तड़प रहा है. उसको फॉलो तभी मिलेगा जब वो गेट अटेंड करेगा. Thank you, Nidhi. Thank you, Nidhi. Thank you, Nidhi. Finally, Nidhi is back again. I mean, she is one permanent fixture in our lives. Uma Gadda, thank you so much, Uma. Thank you, Uma. You guys are super sweet and super nice. Thank you so much, Joshi, again. अब तो Sarbajeet, अब क्या अभी क्या ये तो मेरा नाम क्या रोस्ट कर रहे हो? पूजा. ये जा. He wrote पूजा. मेरा नाम क्यों डाइसेक्ट हो रहा है? So thankfully मेरा नाम वैसे का वैसे ही है. I have COVID. I'm only 16. अरे कुछ नहीं होता अनुष्का, टेंशन मत लो. आराम से जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, घर के जो भी नुस्खे हैं वो फॉलो कर लो, ठीक हो जाओगे. हम लोग साहब कभी ना कभी अरे गया सैवियो नहीं आया हुए थे सफर, एंड ठीक हो जाते हैं यार. डोंट गिव अप टू एनी डिजीज और एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन और एनीथिंग. It can be a human being, it can be anyone for that matter, but never give up for anything for that matter. Savio, अब तेरे नाम का बिल फटा है. अब तेरे नाम का बिल फटा गया है. Look at your name. Somebody saying Savio, sir, which is okay. There were people before you also who have called me that. Savio. Sarbo bro, did you watch? गया नाम ही तूने गलत लिखा कि YouTube ने कमेंट ही हटा दिया तेरा, जो भी कमेंट किया था. Savio, Saibo, yes, I've been called all of this when I was born already. यहाँ पर ये कुछ नहीं है. Savio, yes, that also. Everything. All of this. Yeah, I've heard all of this. पूजा मैम को पू भी बुलाते हैं. नहीं, that is one name जो नहीं बुलाते हम जानबूझ के. Pankaj, $10. Thank you so much, Pankaj. Thank you so very much. Thank you so much. आदित्य सिंह, पेरिस टीम प्लीज इन्वेस्टिगेट जैक म्यूजियम. पेरिस कॉल करके बोलता हूँ मैं, करेगा वो म्यूजियम जो भी होगा मैम. It's Paris. तू क्या कर रहा है? It's Paris, my dear, not Paris. It's not Paris. Paris. Parapsychology and Investigations Research Society. So we are all one.
आज नाम में हल्ला बोल हो रहा है, दिख रहा है मेरे को। आज हाँ सब हाँ नाम का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ऑल कोर्सेस आर लाइव, दे आर ऑलवेज लाइव। जो भी आपने पूछे, जिन्होंने भी पूछा था अबाउट कोर्सेज, द कोर्सेस आर ऑनलाइन एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पे फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड आपको एक्सेस दे दिया जाएगा ऑफ द मटेरियल। एंड वंस यू हैव द मटेरियल यू विल बी गिवन अ टाइमलाइन जिसके अंदर आपको खत्म करना है। तो जनरली 4 to 6 months आप अपने पेस में, अपने स्पीड में खत्म कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। Once it is done, then you can go on to take the assignment, and assignment के बाद there will be a final test. अगर टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाते हो then you'll be certified as a paranormal investigator or as a person who wishes to develop their psychic ability. उसका भी कोर्स है. So people who feel like के वो लोग psychics हैं और they want to develop their psychic abilities or they want to work on their psychic abilities, then उसका भी कोर्स है. There are more courses we are working on. And yeah, Sarbajeet sir, do you remember how Divya changed her name to Sardar? अरे क्या ही अभी याद रखेंगे तो फिर ब्लॉक नहीं कर देंगे। ऋषि झा कहाँ पे है? कोर्स का अभी मैं डाल देता हूँ लिंक, आप देख लो, एनरोल करना है तो कर लो, हमेशा चलता रहता है। बट ये जो कोर्सेस है ना, दीज आर क्वाइट गुड। व्हाई? बिकॉज ये आपको एक बेस आपका क्रिएट कर देते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर साइकिक डेवलपमेंट एंड टू बी ऑन फील्ड कैसे होना चाहिए, बहुत कुछ आपका कवर हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ शॉर्टकट टू टू लर्न द थिंग जो कि हम लोगों ने सालों बैठ के फील्ड जाके रिसर्च करके सीखा है। कौस्तुभी सोलंकी, थैंक यू या कौस्तुभी, थैंक यू सो मच। एंड देखो यहाँ पर देव पूछ रहे हैं, सर्वा भाई व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस? आई वुड लाइक टू से तुम्हारे लिए अनअवेलेबल है। गुड वन, नाइस नाइस। यार ये कीपैड को पाप लगे हाँ, सर, ऐसे ऋषि झा is asking, can anyone gain psychic ability in their lifetime? Please answer, Pooja ma'am and Savio sir. Yeah, of course, we are all born with psychic abilities. It's only that we have not paid attention to it. If we can exercise whatever muscles, we are all born with every muscles, right? लेकिन किस किस के बाइसेप्स स्ट्रांग होते हैं, किसके ट्राइसेप्स स्ट्रांग होते हैं, किसका एब्डोमिनल मसल्स जो है वो स्ट्रांग होता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर एक्सरसाइजिंग. सो इवन योर साइकिक एबिलिटीज, आप जितना एक्सरसाइज करोगे वही स्ट्रांग होगा. बट ऐसा है कि किसी ने उसको स्ट्रेंथनिंग करने का कोई यही नहीं तरीका ही नहीं ढूंढा था. But now we know that, and if you join us on our Ghost Encounter tours, or you do your psychic ability course with Pooja, I think you will be able to gain that. You will be able to strengthen it. And before, मतलब psychic ability course तो available है ही, but as I mentioned even in the last live stream, there is a workshop coming up क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं, and it was difficult for me to revert to everyone. So I thought I will take a workshop in May. So just stay tuned, and मेरा जो Instagram account है या whomever you are following will be posting about the upcoming workshop. तो उसमें मैं ये सारी चीजें clear कर दूंगी. Jay Ganesh is asking Sarbajeet how to know someone has a negative aura. What is the color of negative aura? See, Jay Ganesh, very honestly, if you are not, how do I say? There's a term for it. नहीं याद आ रहा है मेरे को. But some of the psychics can see auras around you. They can see what kind of color you are radiating. The color of the aura basically indicates कि आपके अंदर क्या चल रहा है या फिर आपकी एनर्जी फील्ड कैसी है. And that's how it happens. But फॉर अ कॉमन मैन जो कि साइकिक नहीं है, द बेस्ट वे टू नो कि एक इंसान का नेगेटिव ऑरा है या नहीं, जस्ट फील और ट्राई टू सेंस के वो वाइब्रेशन कैसे छोड़ रहा है. व्हाट आर द वाइब्स दैट पर्सन इज रेडिएटिंग, व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशन इज द टर्म एक्चुअली, क्योंकि वो सबको फील होता है, कोई साइकिक हो नहीं हो, क्योंकि एवरीवन इज अ साइकिक. जैसे कि अभी सावियो भैया ने बताया, सबके अंदर कुछ ना कुछ वो सेंसर है ही जो वाइब्रेशन पकड़ने में कोशिश करता है. वो बात अलग है कि कभी कभी कोई दूसरा थॉट या इंटेंशन वो ओवरपावर करता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. But if you do not ignore that gut feeling of yours, that sensor of catching vibrations, then you would know कि कौन सा इंसान का negative intention है या फिर negative aura है that way. See, I'll add to this. क्या है कि we all have our chakras. We have our 7 chakras in our body, right? And every one is radiating. Every of this chakra are radiating. It depends on which chakra is radiating strongly and which one is radiating slightly weakly.
you know that. And the sum total of all the vibrations, like there are only two vibrations in the world. One is sound and one is sight. Light का spectrum होता है. So you can see the aura by the chakras, the sum total of the vibration of the chakras that are radiating outside. So जैसे कि blue होता है तो there are sadness होता है, या yellow रहेगा तो happiness होता है, green रहेगा तो थोड़ा jealousy होता है. But if you're able to see it, I mean, there is a color spectrums that people are able to see and are not able to see. But आप कितने अंधेरे में रहते हो और आप कितना अपने आंखों को तेज या स्ट्रांग करते हो, या आप कितना मोबाइल के सामने रह के अपने आंखों को वीक करते हो, इट विल डिपेंड ऑन दैट वेदर यू आर एबल टू सी इवन द सटल लाइट दैट इज कमिंग थ्रू. So Yeah. some things at the camera angles, like आप देखोगे कि if when you look at the moon, you can zoom and you can look at the moon very clearly. But आप वही अगर आप मोबाइल कैमरा से अगर उसका तस्वीर खींचने की कोशिश करोगे तो फिर वो नहीं आएगा. So the gadgetry is not very strong enough to catch the different auras. But you with your eyes will be able to see, provided you have trained your eyes to see the different subtle colors and the vibrations that are running around people. I just made Shardula moderator. काम करे थोड़ा बैठ के. बस message नीचे किया था यहाँ पे. नीचे ही Pooja बैठा ma'am, हुआ है, नीचे बैठ के हंस रहा है. how to do emotional healing. Sagrika, I just held a workshop on emotional healing starting of this nahi. Starting of this month. याद नहीं आ रहा कब. थोड़ा time हुआ, just few weeks back. Because this is something that it's difficult to explain over chat or over live stream. It's something that you need to go through and experience and you can take it ahead from there. So just stay tuned. वापस लूंगी मैं. So stay tuned to emotional healing sessions also. Arya Gandhi is commenting, honestly, आपका content and editing top notch है. I think you need to do something with promoting and marketing your channel. Just a small advice, your well wisher. आर्या अभी क्या ही करें मार्केटिंग. आई थिंक जो भी होता है हम अपने अकाउंट में डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे, इधर आप लोगों के कम्युनिटी में डाल देते हैं, एंड वी डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. अब उससे ज्यादा मार्केटिंग क्या ही करें. आई थिंक ऑर्गेनिक रीच की बात ही अलग है कि वो खुद पहुंचता है और सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा लाता है. बट वी आर ओपन टू कोलैबोरेट विद अदर यूट्यूबर्स एक्चुअली एंड अदर पीपल. बट अभी कुछ यूट्यूबर्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेटिंग बिकॉज एक तो पैरानॉर्मल है, वो तो उनकी बहुत लोगों की फटती है. एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन ईमेल अस एंड वी कैन ऑलवेज हैव अ कोलैबोरेशन वीडियो. आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट. दैट्स हाउ वी ग्रो ना. कोलैबोरेट करते करते ही ग्रो कर सकते हैं. दैट्स द ओनली वे, है ना. Yeah. एंड Capricorn is asking, is there any relation between horoscopes and spirits? आप लोग के zodiac signs तो छोड़ दो, but then afterwards, see, depending upon which season and which time of the year you are born and which year you are born, वो टाइम पे stars के alignments क्या थे, constellations कैसे थे, it depends कि उनके gravitational pull कैसी थी, the tides क्या था. Certain characters and certain behaviors keep changing. So yes, there is a relation between horoscope and spirits, but it is not the way that astrologers or commonly जो चूरन बांध के देते हैं कि आज आपके साथ ये होगा वो होगा, वैसा नहीं होता है. Every person is unique and every person का birth is unique. So there is a relation, but it is very complicated. It is not just कि ऐसी horoscopes पढ़ लिए कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा. वो spirit का connection है नहीं, वो वैसा नहीं होता है. When is Get Delhi तो अगले 4-5 महीने के अंदर तो Get Delhi मेरे को दिख नहीं रहा है, वेरी ऑनेस्टली. बट शायद कभी क्या प्लान हो जाए, कोई भरोसा नहीं है. बट यार अभी वही मैं बता रहा हूँ, आप बाकी जगहों पे अगर आप वेट करते रहोगे ना, ट्रस्ट मी, आप वेट करते रह जाओगे. क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं, वेरी ऑनेस्टली. जहाँ पे हमको जो जगह से बुलावा आया फ्रॉम द स्पिरिट्स एंड ऑल, वी आर लाइक चलो उधर गेट करते हैं. तो अगर दिल्ली का आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप लोग तो वेट ही करते रह जाओगे ना वहां पे. इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा पैसा जमा करके. अभी आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि हम लोग का जो टूर है, अगर आपको पे भी करना है, एंड इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, योर पेरेंट्स हैव अ क्रेडिट कार्ड, लेट्स से योर friends have a credit card, you can also pay us via EMI, and the EMI I think starts from some 900 rupees per month or something. तो अगर आपके पास HDFC, SBI ये सब के अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी हैं तो आप उससे भी पे कर सकते हो. फॉर दैट मैटर
अगर आपके HDFC डेबिट कार्ड अकाउंट में भी अगर क्रेडिट है आपके पास, दोज हु हैव HDFC अकाउंट दे नो के यू पीपल गेट अ सेपरेट क्रेडिट अमाउंट फॉर बाइंग एंड डूइंग थिंग्स, आप उससे भी पे कर सकते हो टू कम फॉर गेट, देयर इज नो इशू एट ऑल पेमेंट। एंड ऊपर से बेस्ट पार्ट क्या होता है कि इफ यू वांट टू कम फॉर गेट, लेट्स से अभी हम लोग का गेट मई एंड में हो रहा है, एंड इफ यू वांट टू कम एंड यू आर ऑल रेडी ऑल सेट फॉर द पेमेंट, राइट नाउ आपको सिर्फ 60% ऑफ द अमाउंट ही देना है टू बुक योर सीट। बाकी का डायरेक्टली यू कैन गिव एट महाबलेश्वर, नॉट अ डे बिफोर दैट। आप वहां पे पहुंच जाओ, आप चेक इन कर लो, वहां पे हम आपको रिमाइंडर दे देंगे कि भाई साहब आप बाकी का पेमेंट करना है, आप कर दो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट देन गेट के अलावा यू विल नेवर गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस द पैरानॉर्मल इन द मोस्ट सेफेस्ट वे, क्योंकि बाकी टाइम आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे, कुछ ना कुछ सीन होगा, आप फंसोगे, कुछ ना कुछ आपके जिंदगी के ऊपर इफेक्ट होगा, that will be a lot of mess, very honestly, if you are planning to do that. If you really want to experience the paranormal, learn about it, very honestly. हम बहुत कुछ सिखाते हैं in that workshop. It's like हम तीनों का exclusive sessions होता है in that workshop, जो कि हम कहीं नहीं लेते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अ टूर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि खाली जा रहे हैं, घूम रहे हैं एंड खाली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आ रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ एज ही जस्ट मेंशन्ड कि तीनों के सेशंस होते हैं, बहुत कुछ सिखाया जाता है, डिस्कस किया जाता है, सो इट्स नॉट जस्ट अ टूर। See, what makes us a very potent team now, the three of us together, and we are searching for more passionate people like this, is because Pooja is a natural psychic. She can see, she's a clairvoyant, and she can see different entities, feminine presence या masculine presence, and जैसा आप हमारे videos में देखोगे that she feels it on her own body in the different chakras. And then even when she does her Estes, I've not seen even a single person who does the Estes better than Pooja. So Even she's a I very can't do different type of psychic. Yeah. Uh, we've seen other people also do it, but then afterwards, Pooja yeah. Sacha, I don't know, and I always have that very protective sort of a vibe. I mean, for Pooja, when she gets into that world, it is a very risky, it's a very volatile world. Kuch bhi ho sakta hai. So, I mean, I have all my respect for Pooja, and whenever she does it, Estes, and I'm there. So she teaches the spiritual elements, the spiritual sides of investigations, whereas I'm a very different type of a psychic. मैं अलग हूँ. I will connect with the elements and the rocks or whatever like that are there around, and I will read them. Residual energy पकड़ लेता हूँ, and then afterwards वैसी मेरी psychic ability बहुत अच्छी है, and that is a knowledge that I give at gets. So whenever you go to any haunted location, जैसा आपने पूछा कि किसी की negative aura या जो भी है पहचानना कैसा होता है, that is my baby. सो वो वहां पर आप आओगे तो मैं वो सिखाऊंगा कि रॉक से कैसे इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है या ट्रीज से कैसे इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी इजी, इट कैन बी डन, but then we've not practiced that. Whereas Sarva, I mean, there is hardly any investigator who's as good as Sarva. The limitations of the gadgetry that we have, आप बोल रहे हो कि conjuring house जाओ and investigate करो, but then afterwards yes, वहां पर और भी बहुत लोग गए हैं, and the plethora of gadgetry that they have had, we don't, because we spend from our own pockets. Mostly it's Sarva and Pooja who are spending, and afterwards that's exactly how our society is getting built up, our team is getting built up. So when you talk about investigating, we need more gadgetry, we need more things, obviously, but even in the absence of gadgetry, कभी कभी अपना PSB काम करने बंद करता है, कभी कभी अपना Ghost Meter Pro काम करना बंद करता है, कभी कभी बैटरीज उड़ जाते हैं, कभी कैमराज नहीं रहते हैं, and even in that situation, in that condition, Sarva is the one who will ace every investigation. He will tell, चलो ठीक है, ये नहीं तो हम ये करेंगे, ये नहीं वो करेंगे. He is the best director you ever find. So when you come to our Ghost Encounters tours, you will see exactly what happens and कैसे कैसे क्या किया जाता है. There were a lot of questions के अगर gadgets नहीं use करते हैं तो क्या करेंगे. And Sarva will tell you, you know what, पुराने जमाने में भी investigation हुआ करता था. You could investigate using a balloon, you can investigate using a flame, और अगरबत्ती लेके भी investigate किया जा सकता है. But then where you place it, how you ask questions, where are the hotspots, and when you, I mean, indulge in what, that is exactly what we do on our Ghost Encounters tour. So there is nothing like that experience. I mean, आप वहां पर आ जाओ,
इवन फॉर अ टूर, एंड आई सीन ऑलवेज दिस होता है कि जो एक टूर के लिए आते हैं उनको हमेशा Yeah, दूसरा तीसरा अटेंड करने की I mean, वो एक तलब जैसी लग जाती है, बिकॉज yeah, it's an amazing thing that we organize, and we love to be like, I mean, with around people who are like us, passionate and crazy at the same time. So हम जो होते हैं ना गेट में जाते हैं, हम रात भर सोते नहीं हैं, क्वेश्चन ही yeah. पूछते रहते हैं। कभी हम गिटार बजाएंगे, गाना गाएंगे, कभी एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, जो भी है गेम्स खेलते हैं। महाबलेश्वर वाज ऑसम बिकॉज अपना सुबह का अलार्म ही था कारियोके पे गाना, Yeah, yeah, और वो गा गा के ही सब लोग उठ रहे थे, कोई ना कोई तो माइक मांगेगा और गाएगा एंड ऑल। इट वाज अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। सो दिस ईयर अगेन एट महाबलेश्वर आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम वाइब, द सेम yep, फीलिंग। yep. सो डू All, कम all of us. एंड Even now भी जब हम लोग जब रेकी के लिए भी गए थे, but before that, Yosha, thank you Thank so you, much. योशा, Yosha. Thank या you so योशा, थैंक much. यू। Thank you so And much, Madhuri. thank you, Madhuri. Thank you so much. Thank you so much. Means a lot. इवन अभी भी हम लोग जब रेकी के लिए गए थे टू दिस लोकेशंस, एंड इस बार महाबलेश्वर में पहली बार हो रहा है कि दैट वी आर हैविंग टू इन्वेस्टिगेशंस इन एनी एडिशन। ये कभी पहले नहीं हुआ कि पहली बार हम 2 बार इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलने वाले हैं। यूजुअली हम लोग का जो 2 रात 3 दिन का शेड्यूल होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन एक होता है, एक्सप्लोरेशन एक होता है, ट्रैक एक होता है, वैसा वैसा बहुत है। लेकिन पहली बार we are going to have a trip jahan pe we are having two investigations. It has never happened, guys. If you guys are not planning for this, then I don't know what you're planning for, very honestly. But Mahabaleshwar is something that you guys should be attending for sure. And strawberry bhi kha sakte ho, actually authentic अच्छा, one. does water really have memory? Crazy mommy is asking. Does water really have memory? Of course, water has memory. आप उसके अंदर आप रसना सिरप डाल दो तो उसकी मेमोरी चेंज हो जाती है ना, आप एसिड डालो तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ना। सो वाटर डज हैव मेमोरी, बट आप ये मेमोरी एक्सपेक्ट करोगे कि उसके अंदर एक ब्रेन रहना चाहिए था या न्यूरॉन्स रहने चाहिए थे, वो नहीं होगा। The life that each and every element has is very different. So yes, water does has memory. Some Rothschild was asking Rothschild, किधर है इसका क्वेश्चन था कुछ तो कि what क्या how do क्या good spirits uh, get whatever something harmed if God is there? See, it's simple. It's simple. Now, अगर आप बार्बर के पास जाओगे तो बाल कटेंगे, आप बार्बर के पास नहीं गए और बाद में कंप्लेन करें कि मेरा बाल कोई काट ही नहीं रहा है, तो फिर मतलब नहीं है। इन द सेम वे यू गो टू गॉड एंड गॉड विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट अप्रोच गॉड इन द राइट वे। उनको ऐसा लगता है गॉड इज अ सर्वेंट कि अभी आ जा, मेरा दुख दर्द लेके जा। ऐसा नहीं होता है। द यूनिवर्स हैज अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस इन फंक्शनैलिटी। सो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ एवरीबॉडी, जैसे मैं बोलूंगा अभी, चलो लोग बोलते हैं ना कि बेबीज क्यों मरते हैं, उनकी क्या गलती थी इन ट्रेजेडीज एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? But you have to understand, as a human race, as a whole, we have really screwed up the universe. We have really screwed up the world because there are good people in the universe, but the control of the universe is in the hands of the bad people. सो अभी आपके घर पे जब मच्छर आते हैं, आप ये नहीं देखते हो ना कि वो मच्छर आपको काटा है कि नहीं काटा है। आप सारे मच्छरों को एक साथ मारोगे। यू विल यूज अ रेपेलेंट, जो भी मच्छर आया है। ये नहीं बोलोगे कि वो मच्छर का बच्चा था, अभी तो किसको काटा भी नहीं, वो इनोसेंट है। नो, you will use pest control against all the pests that are coming at home, be it ants, be it insects. छिपकली देखेंगे तो पहली बात तो छिपकली को भगा देंगे, वो ये नहीं देखेगा कि वो छिपकली कर क्या रहा है, राइट? Cockroaches and everything. So in the same way, when the universe looks at the earth and the human race as a whole, वो रेगुलेट करने के लिए एक जगह पे वोल्केनो, तो दूसरी जगह पे अर्थक्वेक, तीसरी जगह पे टोर्नेडोज, तो फोर्थ जगह पे साइक्लोन यूज करके उनको रेगुलेट किया जाएगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल नॉट लुक कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। So bad things do happen with good people, but then afterwards you cannot blame God for that. We have to blame ourselves. Also, someone is asking Pallavi, Sarbajeet sir, Pooja ma'am, and Savio sir, how do you think the fan page is going? This actually reminds me to say, ke bhai sahab, we want to clear it right now. Lots of love for the people who are opening fan pages and everything. हमने कभी expect नहीं किया था, and if you guys are doing, it's very lovely, and thank you so much for promoting more of our content. But please do remember guys, ke please do not spread any kind of hate towards anyone. Please do not put on anything that can cause bad name to you people, to pairs, or to us, because
I want to make it very clear that anything that goes against our policy, against our goals, against what we stand for, we will not take stand behind you. हम आपको support नहीं करेंगे in that matter. So please make sure you are not doing anything. At the end of the day, Pairs is a registered society. The company जो ये सारा event करती है, scare events and everything, it's a registered company under the MCA, Ministry of जो उनका होता है corporate का, वो registered है. The Ghost Encounters जो आप नाम देखते हो, even that name का name is also registered. Ghost Encounters के बाजू में R आता है, registered. उसका IP हमारे पास है. It's an intellectual property that we own. So please do take care when you guys are doing anything. Please do remember that we are called frauds, we are called controversials, we are called fake. हमको बहुत किस्म के नाम्स बताए जाते हैं. हमको पता है how we are handling it, the kind of replies we do and how we are maintaining the dignity in terms of no matter कितना भी hate हमको क्यों ना मिल जाए. अगर आप लोगों को ऐसा hate आएगा हम लोग का नाम देख के, please do not reply them back with more hatred. Yeah. It's always ignore them or just send them love. That's the it. best way. Do not interact or do not be engaged with any kind of altercation where people are saying against us, because they will say They in will times say, to come. and see, very honestly, as he said, we have got more hate than, and why we are so overwhelmed with the kind of love that we are getting from you all is, very honestly, we are receiving it for the first time. In this staying in this field, हमको पहली बार इतना support मिल रहा है, पहली बार इतना love मिल रहा है. इतने सालों से हमको hatred ही मिला है, हमको fake ही बुलाया गया है, और it's always been negative. So अगर fan pages, as he is telling, अगर आपको वो कोई project करता है, portray करता है, so please handle it with wisdom. Don't get overboard about answering it, and take care. If you need any help, you can even ask, instead of just answering something that you shouldn't be saying. People have insulted us on the face. I mean, and I mean, we don't care about it. I mean, we just give love. We said yes, point taken, और हम लोग आगे निकल जाते हैं. Thank you, Madhuri, for Thank you, Thank you, Madhuri. Madhuri. Thank you, Lakshya. There was one more person. How do I control my anger? Ma'am कह How दिया था. do you control your anger? कौन था वो? गया Okay, so जिसने भी पूछा है ये, now see, anger is an after effect of something that is stored inside you, deep inside you. So you need to first find the source कि वो anger क्या चीज trigger कर रहा है, and you have to heal that and not the anger. So देखो कि कब एंगर आता है, कुछ ट्रिगर होता है तब एंगर आता है, so you have to heal the root. एंगर अपने आप फिर निकल जाएगा उस हिसाब से. वेरी गुड सिंपैथी स्टंट. भाई साहब, तू आके हमारे लाइफ में देख रहा है, हम लोग तो तेरे को बुलाए भी नहीं थे, तू हमारे लाइफ में आके हमको क्या कमेंट कर रहा है? You are stalking us, dude. Achha, there are two questions here. One is somebody is asking, are spirits independent of religions? Yes, spirits are very much independent of religion. Religion is a social construct, a human construct that is made to control people. That's the reason different geography, different religions work. जो ऊपर नॉर्थ साइड में स्नो कैप माउंटेन्स में चलता है, वो वहाँ का कल्चर अलग होता है, और जो इक्वेटर के नजदीक रहते हैं उनका कल्चर अलग होता है. यू कैन नॉट मिक्स दोस टू थिंग्स. तो एक जगह पे अगर आपको बोला जाता है कि कवर योरसेल्फ, तो दूसरे जगह पे आप वो नहीं फॉलो कर पाओगे. In the olden times, again, I mean, there were different, I mean, inventions were not present at that point of time. So वो time का culture अलग था. So spirits are completely independent of religion, and that's how we should be. And one good question is, Sarva, this is for you. Somebody had asked, somebody said that instruments are not 100% in investigation. So, फिर क्या? Where is this? Wait a minute. I read that comment actually कि 100% आप उसमें डिपेंड नहीं कर सकते हो, तो उसके बारे में क्या बताना है? That was his gist of the question. नहीं, उसके बारे में I'm going to make a 2-minute Thursday video, so इसलिए I'm not answering. So wait for the video because I'm going to acknowledge and answer your particular question. आ जाएगा जल्दी, probably this Thursday, we don't know. Yes, second, sir. Shweta is asking how to enroll for workshop. Which workshop? The one you are planning to do. Oh, the one which I am planning to do, the psychic, the sixth sense workshop, that is. Shweta, just hang on. I will be rolling the details soon. Coming week, I will be rolling in the details about the workshop and how you can enroll for the workshop. So just keep an eye on my Instagram stories and my posts.
CSK जीत गई ये, congratulations. अच्छा, गुनगुन इज आस्किंग, भैया ये लूसिड ड्रीमिंग सच में होता है क्या? अगर है तो कैसे? हैव बीन सर्चिंग अबाउट दिस सिंस लास्ट 2 or 3 days. बताओ यार, पूजा। और हाँ हाँ, अच्छा। ये है ना ल्यूसिड ड्रीमर हमारा बैठा यहाँ पे. नहीं, lucid dreamer is very much possible, Gungun. Very honestly, I think if you ask me, I have been doing this for the last 30 now, what 10 years now. I think, and it all started when I started meditating. जब शुरुआत किए, see, जब आप meditation करते हो ना, you are not just opening up one aspect of your soul or your body or your mind. You are basically letting the universe know, okay, dude, I'm ready for the next level of my ascension or my knowledge or or for the experience. And universe जो आपको experience देता है ना, वो high आपको कहीं नहीं मिलने वाला, very honestly. And that's what happens also. So for me, when I started meditating, when I started regularly meditating, kind of aggressively meditating, I realized I can calm my mind down to a level where I'm not affected, no matter how serious the situation is, how chaotic the situation is. Even for that matter, Savio bhai ne dekha hai, Pooja ne dekha hai, there are times where I'm just, if I want to just click out of a situation, I can do it with ease. And Yeah. thanks to this meditation that I have been doing for so many years, I can stay calm in some of the chaotic situations. And if I'm losing, that means very intentionally I'm losing my patience wahan pe. Otherwise, the kind of patience I have, it all comes from meditation only. And because of that thing of calming my mind down and able to control my emotions and everything, I realized that when I'm dreaming, I can be in that conscious state to control what is going to happen. इनिशियली आई यूज टू डू दिस कि अब अभी सपोज छोटे छोटे स्टेप से मैंने शुरू किया. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, गुनगुन, आपको बहुत प्रैक्टिस भी करना पड़ता है ऑब्वियसली. बट पहले कभी 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 क्या होता है ना कि द बेसिक स्टेप दैट आई स्टार्टेड इज कि अगर मैं कोई खराब ड्रीम देख रहा हूँ, द फर्स्ट स्टेप वुड बी, और द इनिशियल स्टेप मेरा ये होता था कि मैं वो ड्रीम कैसे तोड़ दूं. Control karna was not the intention. Suppose I'm seeing a dream where someone is chasing me. What I'll do is I'll just break it. I'll just get up like that. It can be at any point of the night, any point of the sleep pattern, very honestly. Then slowly किया अब खुराफती दिमाग तो है आज, लेकिन अगर मैं ड्रीम तोड़ सकता हूँ तो मैं ड्रीम को कंट्रोल भी कर सकता हूँ. So now when I see if someone is coming to me with a knife, I kind of control it or kind of play around, and it's a fun thing to do. बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ नाइटमेयर्स, क्योंकि कभी कभी हम कोई सिचुएशंस में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं कि माइंड में थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसका इम्प्रिंट रह जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ड्रीम्स आते ही हैं. It's like that. That's how the human mind works. But when you know lucid dreaming, you can come out and enjoy that dream uh, rather than getting scared of it. I remember I was having this dream once, and उसमें कहीं तो it was something related to this. I think we were in London or something. We were investigating a place. It was an influence from an investigation that I was watching. This is many years back. And investigate karte karte, I think I'm about to ask a question, and I see ऊपर and I see that eye of London, and I'm like, dude, this is not real. हम लोग लंदन आए ही नहीं है. There is no passport. The host has muted, unmuted. अच्छा, आपने म्यूट कर दिया था मेरे को अभी. अब मैं खुद म्यूट होने वाला था. So and then I saw, okay, we were in London, and I'm like, no, this is no in London, but let's see where we are going. So the dream continued till the time I took the entire team to the Eye of London, and वहां पे जाके something happened. That was my mummy's call. कह रहे तेरे को कॉलेज नहीं जाना है क्या? And yeah, that's how the dream ended. Acha, 1 sec. So Lakshmi is asking एक that. minute before that, Dark Knight Lord 70. I have some dreams that turns into reality. Could you tell me why this happens? Thank you so much, first of all. Thank you, Dark And Knight you are getting Lord. you are getting premonitions basically via your dreams. Yeah, And they are more of premonitions. Yeah. Than if it's getting real, it's a premonition. Yes. And thank you, Joshi Vlogs. I mean, for 44 Joshi rupees. Vlogs. Yes, Yeah. yes. Thank you. And Thank you. want so to know much. more about Mount Church wala case? I think so. That entire thing is documented on our video. If you watch the video, you'll get to know everything about it. I hope by Mount Wala Church, I think you're talking about the Nainital Church. So that is already there. Yeah. Okay, so Lakshmi is asking about crystals. Yes, we do have crystals in the spiritual shop. So you can check higherdimensions.in. This is the spiritual segment की website. उसमें आपको crystals मिल जाएंगे.
And Shweta was actually asking, I think Shweta only her name was, I forgot. Shweta, if you're still there online, she was asking about Mahabaleshwar, how she can enroll for Mahabaleshwar. Shweta, that is not a workshop. That is a complete tour of 2 nights and 3 days, which has workshops in it, along with paranormal investigations. So you can connect with us on Instagram. जिसको भी आप follow करते हो, तीनों में से आप किसी को भी message कर सकते हो. We'll help you through it. Yeah. Yeah. Pallavi and Divya, they were asking about exam stress. You don't have to take any stress if you have studied. Whatever has to happen will happen. You have to understand that you have a different amount of skill sets for everything. You cannot judge an elephant by its ability to climb a tree. वो नहीं होगा. Or a fish to hop on land. वो नहीं होगा. So you have to understand कि आपके skill sets क्या है and where you can exactly excel. केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये हमको फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए स्कूल में दिया जाता है, बट इट डजंट मीन दैट वी हैव टू एक्सेल इन ऑल दीज थिंग्स. If you Yeah. find your calling on a, जैसे कि I was a language trainer, I was an NLP neuro linguistic programming trainer, a hypnotherapist, but अभी वो सब कुछ छोड़ के I am there in this paranormal field. Sarbajeet is an engineer, और वो छोड़ के अभी वो paranormal field में हम research कर रहे हैं. Uh, yeah, I mean, we are not, I mean, financially that up right now. We are still up, getting up there. But then after, there is a lot of satisfaction and passion in this what we are doing right now. So find your passion, और वो passion अगर आप follow करोगे तो stress कभी नहीं रहेगा एग्जाम में. आप जो करने आराम से जाके कर सकते हो. Just do Meanwhile, your yeah. best. That's it. Don't worry That's about what others are going to think. That's Meanwhile, thank you so much, Saransh, and thank you so much, Mo Upasna. Mopasana. Yeah. You? Thank you so Upasana. much. There's a question from Yosha. I encounter many energies on my workplace, that is government hospital. Quite Oh, obvious. How can I yes, heal my yes, emotional yes, energies yes. after coming from work? Please shield yourself before you go for work. Shield your energy even before you are heading for work. मैंने जैसे shielding का the shortest version बताया था in my nightmare वाला That 2 came minutes. yesterday. Yeah, कल जो upload हुआ है, the shortest version and the quickest version is just shield yourself from the energies with a very strong intention before you get into. Because if you are an empath, you will be a sponge for the emotions and energies around you. So you need to shield yourself. Once you are back home, if you feel overwhelmed, you can try having a saltwater bath. Ground your energy अच्छे से, so that you can release all that negative energy that you have accumulated in your auric field. So उसको flush out करना बहुत जरूरी है, so that you can make yourself ready for the next day. Dr. Das, I think she just answered your query as well. You are also a practitioner, I can see that. And आपको भी अगर वैसे सब चीजें आपको फील हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो पूजा ने जो बताया आप वो फॉलो कर सकते हो. And we can, feel free to contact us. अगर आपसे नहीं होता है हैंडल, we do provide some services जो कि शायद आपको मदद करेंगी. And meanwhile, Uma, thank you again. Thank you, Uma. Thank you, Uma. Manifesting that you have to go to the Conjuring House. Thank you. That's a sentence that everyone should be using right now. We have to go to the Conjuring House right now. Let's conjure the Conjuring House. Conjuring House. I can only visualize, not imagine. I can only visualize what would happen when we are there, and the kind of experiments I'm going to perform on you, on Pooja, on if there is anyone else when we are at the Conjuring House, and myself as well. It's like a very sinister thought that is going on in terms of investigation, but I think it would be great. फितूरी दिमाग already चलना शुरू. But I think it would be great and awesome to experience what we have seen in the movie, what we have seen from other investigation videos, the things that people have captured out there. I think Conjuring is something. And Conjuring House ke baaju mein there's a graveyard as well. That graveyard is where the grave of the witch who was allegedly killed in the house lies. She lies out there in the graveyard. So it's like we have the graveyard as well as the Conjuring House that can be investigated. You know what? We can ditch a hotel and stay at the Conjuring House and investigate the entire night. That's the plan. Allowed MR hai na? Yes, we can pay and stay there overnight, or no matter how many nights we want to stay. We can stay at the Conjuring House. अगर रात नहीं गए तो फिर क्या गए?
हाँ नहीं, रात में रहने का उधर ही, कि भूत को ही बोलेंगे तू भी आ जा, साथ में गिटार बजाते हैं, बात करते हैं, आराम से साथ में ouija खेलते हैं. उइजा खेलते हैं. Actually, there are two questions, like a very similar questions right now. Pallavi is asking, Pooja ma'am, I wanted to ask you that if we meditate for a long time, so can we feel a spirit attachment to our aura or anything like this? And then again, Alan Denzel का भी सवाल almost वैसे ही कुछ है. Sarva bhai, Pooja ma'am, and Savio sir, I have heard that inclination towards the paranormal affects your family as well. What is your take on this? Any experience? कौन सा पहले वाला हम आंसर कर रहे हैं? If you meditate for a long time, if you feel a spirit attachment, नहीं यार, meditation से spirit attachment भगा देते हैं हम लोग अपने आप को shield करते हैं. तो with meditate, yeah, but if you meditate particularly on getting manifested or possessed, yes, you will. If you invite an entity on your auric, or auric field, आप कर सकते हो, आप attach कर सकते हो. So that is not what we need. The goal of meditation should be to strengthen your own aura, your own soul. So never do, I mean, meditate for that long, wherein you're actually manifesting a different demon or a different entity. Or with that And intention. yeah, and Alan Denzel, inclination towards the paranormal effects of family as well. Not really, not really. हमारे घर में सब है. We have our children, we have our pets and everything like that. Not really. If you know how to protect yourself, if you know how to keep, Yes. a spade, nothing really happens. For example, as an example, I'll give you, like, what, if you're working in a coal mine, right? When you come home, you will first wash yourself and then come home, right? आप वो गंदगी लेके आप घर पे नहीं आओगे, तो फिर आप गंदगी लेके घर पे आओगे तो फिर घर पे सबको इफेक्ट होगा, right? So you have to clean yourself outside and then come home. If you're in the mafia, then people might come home to affect you. तो आप माफिया से दूर ही रहो ना. Why do you want to manifest that in your life? So things will affect only till how much you want them to affect. Otherwise, Yes. it's all right. It's okay. Yeah. Our Sam and Kobe legit. We think so. We think so. Football, जो भी आपका username था, because they are quite innocent is what I feel, and बेचारे exploring के चक्कर में जेल भी गए हैं for their YouTube content. But yeah, I think they are quite legit. Why legit? पता है क्या? Because they एक तो they are doing something without any assumption. They don't have any assumption कि अच्छा हमको ऐसा कुछ दिखेगा. They go in quite raw. Even for that matter, जो gadget वो लोग use करते हैं, उसके बारे में भी उनको कोई idea नहीं है. But still they're using it because they want to experience कि क्या होता है जब कुछ चीज होता है. And that is also beautiful in a way if you're not faking it, you know. But yeah, again, Mopasna ने 1100 donate किया. Thank you so Thank much. you. Thank you so very much. Hello And your team, question? I used to have nightmares where I knew I'm dreaming but unable to wake up. In that same room, I heard sounds of pile along with my dad right after 14 days. I have premonitions and remember all my dreams, nightmares right from childhood. Okay. You know, some of, I think you are all psychic in some, like आपका enhanced है काफी अच्छा खासा. Okay, her name is Upasna. She just mentioned there. Yeah, it's Okay. Mo Upasna, I think. हाँ. I don't know if That she's Odia or I something. am Upasna. Does that Yeah, mean Mo I am in Upasna? Odia means I. Okay. So I don't know if she's okay. Odia or not. But so thank you, Upasna. what if the conjuring wala spirit follows you back to India? It is possible ना. अरे तो खिला देंगे थोड़ा ऐसा उनको भी खाना वाना कुछ ऐसा. We'll take them for gets. नहीं वैसे नहीं होता है आदित्य. जैसे अभी सावियो भाई ने बताया कि we cleanse ourselves, we shield ourselves, we meditate and we make sure कि nothing follows us. No matter how powerful it is, how demonic it is, how inhuman it is, we know उसका औकात उसको कहाँ पे दिखाना है. So yeah, we make sure कि we are always in control in such situations. So no matter how many experiments you see us doing, how many triggering moments you see us doing, we are always in control. Remember that. So आप लोग वो जाके repeat नहीं करना. Whenever I'm doing a triggering moment, I know I'm in control. Just know that. मुझे पता है कि मैं control में हूँ. That's why I do those experiments, right? So yeah. Shubham Sudhir says, thanks, Savio Bhaiya. The black teacher has stopped the movement after I kept it under observation. Yes, I mean, that happened. Thank you. I mean, whatever. You're welcome. I think we should wrap up. It's post 11 already. इस बार तो time पता ही नहीं चला. जबरदस्त गया actually live. And it's time to announce the क्या बोलते हैं उसको? Fandom name. Yes.
कोई गेस सबको भी नहीं कर पाएगा शॉक एक्चुअली, होने वाला है। सबको को शॉक होने वाला है। आई थिंक ये सब मैच छोड़ के फैंडम नेम देख के आने वाले हैं। बट ये जो फैंडम नेम है, रिमेंबर, ये हम लोगों ने इसलिए नाम रखा है बिकॉज वी सॉ के क्वाइट जो सजेशंस हमको मिले थे, दे वर काइंड ऑफ गेटिंग रिलेटेड टू फ्यू ऑफ द टर्म्स जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे फॉलोअर्स को वो बोला जाए या फिर टॉन्ट मारा जाए या फिर उसका मजाक उड़ाया जाए। The names are really good. They are some of the best names we have seen, and इसलिए हम लोगों ने उसको पोल में भी अलाउ किया था। But then we realized later, even after having a discussion with the team and all, कि ये ना मजाक बन सकता है, तो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का मजाक बने, because we love you guys so much, we appreciate the things that you do for us, and we want कि लोग हमको जितना respect करते हैं, हमारी fandom को भी उतना ही respect करें। Keeping that in mind, 1100 का डोनेशन 100 दिख रहा है, किसको दिख रहा है? हमको 1100 दिख रहा है यार। Yeah, so the fandom name goes something like this. You guys, Abhimanyu Singh, thank you so much yaar. Thank you so you. much. Thank you so much. Thank you, Abhimanyu. What is fandom? Ansh, fandom is basically a group जो कि फॉर्म होता है for people जिनके fans होते हैं। Basically, we have got some very sweet people who are our followers and subscribers, and they love us so much that they call themselves our fan, yeah. and वो लोग का एक ग्रुप बन रहा है जिसको fandom बोला जाता है। And I prefer calling them a community rather than fans. हम लोग कोई बड़े celebrities नहीं है। So this is the fandom name. ये ना हम लोग का ITR रिपोर्ट में मैंने लिखा हुआ है। अरे बियर बाइसेप थोड़ी होएगा हम लोग का फैंडम नेम। बट जस्ट टू लेट यू नो, जो 5 लोगों का नाम सिलेक्ट किया गया था, जो लोगों ने जो सजेस्ट किया था, जो 5 लोगों का नाम सिलेक्ट किया गया था, उनको, आप सबको, ऑल 5 ऑफ यू विल बी गेटिंग अ फ्री टी शर्ट ऑफ दिस फैंडम जब भी हम बनाएंगे उसको। पहले हम एक को देने वाले थे, द विनर। अभी सिंस विनर हम ही लोग हैं, हम ही लोग डिसाइड कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू, ऑल 5 ऑफ यू जिन लोगों ने सजेस्ट किया था, आप लोग प्लीज याद रखना कि आप लोग सिलेक्ट हुए थे। हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे वेरी सून व्हेन वी हैव द टी शर्ट। इट्स ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिजाइन्ड, एंड वंस इट इज आउट, आपको एक्सक्लूसिवली फ्री विदाउट एनी चार्ज आपको भेज दिया जाएगा। एंड वी वांट यू पीपल टू वेयर इट, क्लिक अ फोटो एंड टैग अस इन द फोटो, बिकॉज वी वांट द वर्ल्ड टू नो कि ऐसा करके हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया है। नीलेश झा को शूट आउट दे दो भैया, बिग फैन। नीलेश झा, शूट आउट टू यू। शाउट आउट टू यू नीलेश झा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. But yeah, thanks. This thanks, is the Lakshya. fandom name that we have. This is the fandom name. मैं दिखा रहा हूँ ना? दिख रहा है। हाँ. Anima is our fandom name that we have selected. ANIMA. The best person to explain what is anima is Savio Furtado. Please explain. Anima, the root of the word is anime. Anime means life. Anima. So when you say animate, is like bringing to life any lifeless cartoon. So that's called animate. So animation is like to bring to life. So anima actually means life. It's the soul, it's the energy behind anything. The what is that called? The synonyms of anima is zest, viva, like same thing. Vivacious बोलते हैं तो it's full of life. Zestful बोलते हैं तो वो again it's full of life. So anima is the actual life, the main thing that is behind everything. So the soul, the energy, that is anima. Yes. So anima in simple term is soul. Anima equals soul. जैसे भैया ने बताया, life, soul is all they are all related. They are all synonyms to this name anima. And we all thought that we should give a name that represents the kindness you people have, the life you people have, for the content we are creating, for the field we are in. And anima was the best one जो हमको लगा. Anima is the name we are going ahead with. See, when you say anima, there are words which have anima in that. That means magnanimous. Yeah. So magnanimous means you're magnificent anima. So that means you're a magnificent soul. So that was a magnanimous. फिर अगर कोई डरा हुआ रहता है, anybody is like frightened and all the time very timid, shy, उसको pussy बोलते हैं, right? But pussy आता कहाँ से? It is not what you're thinking. Pussy is a short form of pusillanimous.
Pusillanimous का मतलब a very timid, a very shy, a very scared person. Pusillanimous. You Google it, you'll get to know. So pusillanimous is a very timid, a very scared person. So वैसा होता है. तो anima actually means life, the soul. या सर आपने बोला था कि शाउट आउट के लिए कुछ करो, मैंने कार्टविल करी थी, वो तो वीडियो चाहिए उसका. So sweet. वीडियो रिकॉर्ड करो, कौन है हमको वो? डीएम करो, कौन है वो? हम आपका नाम सबसे पहले लेंगे नेक्स्ट टाइम. अक्षरा. अच्छा, there वीडियो was बनाओ, हमको डीएम करो. there is Lakshya who has donated some money, and then he has said that वो एक normal chat में जो question पूछा था उसका जवाब दो. यार So आप thank you 50 Lakshya for that. या No, थैंक यू सो मच. question. Thank you. I've searched for that question. It says, once after doing 108 Om chant, I was feeling something doesn't want me to complete. When I tried to sleep, I saw an image of a lady come from my room's door and sat beside me. What was that? Please guide. You want to answer? I'm actually replying to Uh, few comments. See, and there was one more other question. I think it was Divya or somebody who had asked that, or somebody who had asked, like whenever she meditates or whenever she prays, there are some fights at home taking place. Is there a connection? So that is exactly how this happens. See, the bad elements or the evil elements will never want you to do anything good, right? So if you're chanting Om, there will be some people who are disturbed by it. If there is an evil occult entity in your house or somewhere around you, they will not want you to do it. So they will obviously come and attack you. Right. So in the same way, when you pray, there are fights taking place at home. So what you do is you first shield your people and then you start praying. And even in your meditation, if you don't want these entities to come, first of all, क्या करना होता है? Grounding करना होता है. Grounding का मतलब है अपना root चक्र जो मूर्धरा बोलते हैं. मूर्धरा is connected to the elements of this earth. तो आप सबसे पहले वो root अगर आप ये कर लोगे, grounding कर लोगे, तो आपको बाहर से अटैक नहीं आएगा. यू विल स्ट्रेंथन योर ऑरा, यू विल ड्रॉ फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट आर देयर बिटवीन इन द अर्थ. सो वो नहीं होगा. एंड देन वंस यू शील्ड, देन आप मेडिटेट करो. आपका सहस्त्र जो है, दैट सहस्रारा, दैट इज योर क्राउन चक्र खोल दो. देन यू आर वेरी सेफ. इफ यू आर नॉट ग्राउंडेड, प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका सोल जो है एस्ट्रल ट्रैवल करके कहीं भी जा सकता है, एंड इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक अगेन. एंड आप वापस आओगे तो अटैचमेंट्स हो सकती है. So shielding is the first thing. Rooting and shielding is the first thing. Grounding and shielding is the first thing that you need to do before meditation. आप अगर shielding करोगे और आप अगर grounding करोगे, तो ये entities की कोई मजाल नहीं होगी आपके पास में आने के लिए, because you will obviously be shielded. खुशागर अभी तू खुद का खुद ही ले रहा है एंड मेरे को और चांसेस दे रहा है लेने के लिए. I was just stopping my laughter कि मैं Savio को कुछ explain कर रहा है, मैं हंसना तू तो खुद का खुद ले रहा है और मेरे को और चांसेस दे रहा है. Which are the 5 lucky people? आयुष, अगर जो पोलिंग में जो 5 नाम चूज किए गए थे, आई थिंक पैरानॉइड्स था, साइकी था, स्पूकी सिंडिकेट था, एंड देयर वर 2 मोर. आई थिंक हम लोग के एडमिन ने लिख के रखा होगा. ये 5 लोगों को दे विल बी गेटिंग द फर्स्ट एक्सक्लूसिव लॉन्च जब भी होगा ऑफ द फैंडम टी शर्ट. ये 5 लोगों को सबसे पहले मिलने वाला है फ्री में. बाकी लोगों के लिए तो आ ही जाएगा. But I think, guys, that's it. We'll have to wrap. Please do help us reach 50,000 subscribers by the end of May. Please do share with your family members. भले ही आपके पापा नहीं देखते हैं YouTube, but फिर भी एक अकाउंट क्रिएट करके सब्सक्राइब करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. आपके दोस्त लोग, आपके फियांसे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चाचा चाची, anyone who is interested in the paranormal, please do ask them to subscribe. Please do share. Please do comment. And please do help us to reach 50,000 subscribers before May ends. Because जो हमने बताया था वो तो होगा ही for sure. But there is one more thing that we are planning, which is an internal production जो कि होने वाला है, produced by Scare Events in association with Pairs. वो भी आएगा जब हम 50,000 subscribers reach कर जाएंगे. But before that, we have to hit 50,000 subscribers. Let's do this. And thank you so much everyone for the donation. Upasana, Laksh, and Nidhi. I'm sorry if I'm forgetting बाकियों का name. You guys are really sweet. जिन लोगों ने भी donate किया, जो लोगों ने नहीं भी किया, आप लोग भी काफी sweet हो, because आप IPL सब कुछ छोड़ के आप इधर थे हमारे साथ. I think after the first live, this is the second one कि हम लोग इतने ज्यादा viewership हमको मिला था. We were almost at 185 व्यूअरशिप पे थे. वी आर ऑलमोस्ट एट 200. एंड यस, कॉन्जरिंग विल हैपन फॉर श्योर. अभी तो पक्का है होगा. कब होगा वो हमको पता नहीं है, बट होगा फॉर श्योर. दैट्स हैपनिंग फॉर श्योर. बट एज ऑफ नाउ, टेक केयर एवरीवन.
and please do watch tomorrow's podcast. It's going to be amazing. परसों रिएक्शन वीडियो आने वाला है, उसके लिए भी हमने शेड्यूल कर दिया है. Do switch on your notification for that, and podcast के लिए भी अभी हम शेड्यूल कर देंगे. कल 7 बजे podcast live हो जाएगा. Until then, take care guys. Take care. Bye. Bye. Good night. Connect on Insta. आराम से. Yeah. Yeah. For more questions or next week का इंतजार करो. We'll answer all your questions. Yeah. Bye everyone. Take care. Bye. And good night.